फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और उसके अंदर पता भी नहीं चल रहा है कि ग्लास बॉटल इसके अंदर है। बस ये थोड़ी सी भारी हो चुकी है, इसका अच्छा खासा वेट हो चुका है। वेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना इसका वेट हो रहा है। इसका वेट हो रहा है 1 किलो 105 ग्राम, मतलब इतना ये हैवी हो चुका है। ये आपका 1 केजी से ऊपर हो चुका है और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस पर मैंने जो पूरा वार्निश कर दी थी, तो जिससे हमारी जो होती है वुड वार्निश जो मैंने इसमें करी थी, जितनी आप विंडोज़ देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये बाद में ड्राई होने के बाद ये पूरी येलोइश हो चुकी थी। इसके बाद इसको व्हाइट रखने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट कलर कर दिया था। जो व्हाइट कलर का ऑयल पेंट आता है उससे आप इसको पूरा व्हाइट कर सकते हैं, जिससे वो वाटरप्रूफ हो जाता है। बाकी चीज़ों में आपको वुड वार्निश ही करनी है, क्योंकि जितना ये आपका पूरा वर्क है वो परमानेंट आपका बना रहेगा, वाटरप्रूफ भी रहेगा और इसको आप वॉश भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर में सजा सकते हैं या फिर इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके का वर्क आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरीके का वर्क परचेज करना है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल आर्ट्स करके इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और इस तरीके के वर्क को परचेज कर सकते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के वर्क मैं ऑल इंडिया सप्लाई भी करता रहता हूं। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके का वर्क बनाना चाहते हैं तो आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया कि कैसे आप इस तरीके के वर्क को बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।